अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस सोन अजुक टॉपिक ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। युस फोर्स ये फोर्स करो अप्लाई कुछ बॉडी पे यानी पुश करोस या पुल करोस यह कर चेंज अमिच स्टेट ऑफ मोशन। यानी युस स्टेट ऑफ रेस्ट यह आन अत मोशनस मज या स्टेट ऑफ मोशनस मज यह आन अत स्टेट ऑफ रेस्टस मज। We will do an activity. Activity 9.3. Take a rubber ball and place it on a leveled surface such as table top or a concrete floor. ऐसे निमो अख रबर बाल अख यह थोन पत अकिस कंक्रीट या वी कैन से दैट सॉलिड सरफेस पे मगर सरफेस गस लेवलड आसनी सह गस न रफ आसनी सह गस यूं कहिएगा कि सह गस पॉलिश्ड आसनी सह गस न रफ आसनी स्मूथ गस आसनी। तम खतर हेको टेबल यूज कर टेबल सरफेस स्मूथ आसान रफ आसान कहें यह लेवलड आसान अत अप्स एंड डाउन्स आसान कहें। या हेको नित फ्लोर युस पत्थर आसान टल आसन स्टाइल लगवित या आसिस पलस्तर कर ये हेकोन यूज कर। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलॉन्ग द लेवल सरफेस दपा पत दी तो अत जनरली अत ये थो अस बॉल पत दिमो आराम सत दक। Does the ball begin to move? दपा वनियो सा यह बॉल कर मूव यह हेया मूव कर यह वो फिगर 9.6 मज। Does the ball begin to move? Push the ball again while it is still moving. दपा वन आसि बॉल पकनी तुह दी तो बे अत दक। Is there any change in its speed? दपा वन अथ मज समझावा अमच स्पीड मज आया कह चेंज। यह बॉल हवित बॉल एट रेस्ट बिगिन्स टू मूव व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यह गो रेस्टस पे ये वह दक अत दुत यह हावान दक दुत यह लज ब्रोट कन पकने मगर वन यह पकनी आसान अत बे दिन दपा वन अमच स्पीड मज आया कह चेंज। डज इट इंक्रीज आर डिक्रीज स्पीड गया इंक्रीज कि डिक्रीज यह स्पीड गई जाहिर सी बात है अमच रफ्तार गस इंक्रीज। नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल दपा वो थो तो पन यह पाम मज अत बुथ रुकावन खतर। रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टच इट दपा युथ यह मूविंग बॉल तुहस अथस टच कर तुह नीव सा अत पन हटवित यह तुलिन सह योकुन। डज योर पाम अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल दपा तुहद पाम यह मज अत फोर्स कर अत पे अप्लाई। वट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ दपा अत बॉल हज स्पीड क्या वो गसान। डज इट इंक्रीज आर डिक्रीज इंक्रीज गसान या डिक्रीज गसान। वट वुड हैपन इफ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल क्या से गस अगर तुहद पाम होल्ड कर मूविंग बॉल यह मूविंग बॉल अत कर होल्ड अत रुकाय। You might recall similar situation, for example, while taking a penalty kick in the football, the player applies force on the ball. दपन तुह खिकवा याद कर कि यम सात अस पतमिस सबकस मज पर्याव यम सात पेनल्टी किक करान यह फुटबॉल प्लेयर यह अत पे फोर्स अप्लाई करान बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट क्या सह गोडनथ तथ बॉल रेस्टस मज थावान तम पत इवान दौर लगत तो सान तथ अक किक एंड सो इट स्पीड वाज जीरो। तो यम सात यह रेस्टस मज अमच स्पीड जीरो आसान पत अमच अत किक वस अत पे फोर्स गसान अप्लाई अमच स्पीड तो इंक्रीज गसान। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल तो यह अत गोलस कुन अत मूव करान यम सात किक त्रावान फुटबॉल प्लेयर अत यह गोलस कुन मूव करान क्या यह अत पे फोर्स अप्लाई करान। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल तो पत करो तुम सपोज कि यह गोल कीपर आसान यह डाइव लगान अमिस गोल बचावन या जंप तुलान यह बॉल रटने खतर बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। तो यह क्या यह अत पे फोर्स अप्लाई करान इत पे मूविंग बॉल पे योर फोर्स अप्लाई करान ताकि यह कर रुकावन कोशिश। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल दस योर यह फोर्स अत अप्लाई कर यह हेक्या अत स्टॉप कर यानी यह दी गोल गसन कहें नत क्या कर नत कर अमिच डायरेक्शन चेंज गोल साइडस रटस
دَکہٕ دِیَس یہِ گژھِ گولہٕ نیٚبٕرۍ ژَلٕنۍ نیٖرِتھ گول گژھِ نہٕ گژھُن. The force applied by him can, if the goalkeeper succeeds in stopping the goal, its speed decreases to 0. اگر أمۍ یہِ کیچ اَتھ روٚٹ بالکل دیُتُن نہٕ گول گژھنہٕ کِہیٖنۍ یہِ رٔٹُن کھۄنہِ کٮ۪تھ یا اَتھَن منٛز رٔٹُن یہِ تہٕ وٹ وِل ہیپن اَمِچ سپیٖڈ گژھِ ایبرپٹلی ڈاوُن 0-وَس پٮ۪ٹھ. These observations suggest that a force applied on an object may change. دَپان یُس یِتھ پٲٹھۍ گوٚو اَسہِ یہِ کٕلیر یُس یہِ فورس أسۍ ایپلاے کران چھِ کُنہِ اوبجیکٹس پٮ۪ٹھ مے چینج اِٹ سپیٖڈ یہِ ہسا ہیٚکہِ اَمِچ سپیٖڈ چینج کٔرِتھ. If the force applied on the object is in the direction of motion, اگر سا فورس أسۍ ایپلاے کرو in the direction of motion یوکُن یہِ پکان آسہِ the speed of the object increase تیٚلہِ گژھِ یِم اوبجیکٹٕچ speed increase. If the force is applied in the direction opposed to the direction of motion, اگر سا أسۍ کیاہ کرو ایپلاے سپیٖڈ کرو فورس کرو أسۍ ایپلاے ڈایریکشن یتھ ڈایریکشن منٛز یہِ پکان آسہِ اوبجیکٹ اتھ اپوزِٹ تہٕ وٹ وِل ہیپن دین اِٹ رِزلٹس اِن د ڈِکریٖز آف سپیٖڈ آف د اوبجیکٹ تیٚلہِ سا گژھِ یہِ سپیٖڈ اَمہِ اوبجیکٹٕچ ڈِکریٖز. وی ہیو سیٖن چِلڈرن competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. We have seen children. اَسہِ چھِ بَچہٕ وٕچھمٕتۍ competing with one another یِم اکھ أکِس سۭتۍ کَمپیٖٹ کران چھِ مان لگاوان چھِ دورٕ لگاوان چھِ in moving a rubber tire. تِم چھِ ربرِ ہُنٛد ٹایر چلاوان پکناوان روڈس پٮ۪ٹھ or a ring یا چھُ آسان سُہ ring by pushing it ییٚمہِ ساتہٕ تِم تتھ کانسٹنٹلی ٹاس ژھٕنان چھِ. تُہۍ چھِو گِنٛدان کانسٹنٹلی ییٚلہِ اتھ ٹایرس ٹاس ژھٕنو وٹ از ہیپنِنگ یہِ چھُ زیادٕ اَمِچ سپیٖڈ بڑان یہِ چھُ تیز پکان. I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed. وسے توٚر مےٚ یہِ سمجھس ییٚلہِ تہِ أسۍ اتھ ٹٲرس کیاہ کران چھِ ٹاس لایان چھِ یہِ تیز پکناونہٕ خٲطرٕ اَمِچ سپیٖڈ چھِ گین گژھان. Now you are curious to know whether application of a force can only change the speed of an object. دَپان ٲسِو تُہۍ کیوٗریس بےتاب یہِ زاننہٕ خٲطرٕ کہِ ایپلِکیشن آف فورس یُس یہِ فورس أسۍ ایپلاے کران چھِ یہِ چھا سپیٖڈ اوبجیکٹٕچ چینج کران کِنہٕ نہ یہِ وٕچھو بیٚکِس کلاسس منٛز.